British Deputy High Commissioner. It's my honor and privilege to introduce you, sir. Mike is Britain's Deputy High Commissioner in Karachi and Trade Director for Pakistan. He's a career diplomat who joined the Foreign and Commonwealth Office in the year 1980s. He has had several positions in Malaysia, Russia, Ghana, Saudi Arabia, and Greece. More recently, he has been Deputy High Commissioner in Chennai and Deputy Ambassador in Kabul. He's also spent a period on sabbatical from the Foreign Service, gaining experience in the private sector. Several of Mike's roles have focused on international security, regional politics, and supporting bilateral trade and investment priorities. May I present you Mike from British Deputy High Commissioner. Please give him a warm welcome. Shazad, thank you very much for that warm welcome, and I'm really delighted and honoured to be at this function. The reason I'm here is that I know the Rotary Club that Shazad is very involved in, and they are a fine group of individuals doing wonderful community work in Karachi, Sindh and further afield, and I know that they are one of many Rotary clubs that do fantastic work in Pakistan. You know, the End Polio Now campaign, some of the education and healthcare support that they give, and it really underlines the philanthropic nature of Pakistani individuals and organisations. And so when Shazad recommended that I come to this event, I was keen to try and fit it into my programme, but unfortunately I can't stay for very long, so please don't be offended if you see me slip away before the end of the programme. I'm afraid that's the nature of being a diplomat here. So as Shazad said, I'm the senior British government representative here in Karachi. I cover, for my foreign service, I cover our relations with the provinces of Sindh and Balochistan, but I'm also our trade director covering all of Pakistan, and actually I'm now our trade commissioner for the UK for Pakistan, Afghanistan, Jordan, Lebanon, Iran, Iraq. So I have these additional titles. I don't get any extra pay, unfortunately, but I just get a longer business card for my trouble. And I've been in Pakistan for a couple of years, and I enjoy living and working in this city and in this country very much indeed. And I'm really happy to hear that the theme of this event is about security and health and education. But if I could just make one, I hope, constructive criticism, I think it's embarrassing that we're at an event talking about women and there is no woman sitting in the front row, and there don't appear to be any women speakers other than the Master of Ceremonies. So I have to say, if I had known that, I would not have come, because I refuse to speak on all male panels. You know, we call them manels. And I know you're laughing, but really it's not a joke. How do we expect to help women rise in society if it's the men telling the women how much they're going to help change the society? And so I'm not saying that the UK is perfect in this regard. Of course, there is no country that is perfect. But I think we really do need to look at, if we're having an event about women, about security, health, education, let's hear from women. I don't particularly want to hear from middle-aged men like me. I'm sure you don't want to listen to me talking about this. We would rather hear from women. And too often it's women who are the Master of Ceremonies and all of the men who are doing the keynote speeches. So next time you have a she conference, let's have some women and not just men. But the issues themselves are hugely important and significant. I mean, particularly if we look at COVID, an area that the UK government in Pakistan has been very focused on is in helping the education sector, particularly the public sector in this country. And we've tended to do a lot of programmes in the provinces of Punjab and KPK. We've done some work in Sindh. And what we know is that getting girls into education is hard enough by itself, but if they have had to drop out of education because of things like COVID and face-to-face learning being affected, getting them back to school is going to be doubly difficult in the post-COVID period. So I think it is incumbent on all of us to try and do what we can to
support the education sector. And I've been doing, in the private space, I've been supporting the Citizens Foundation, which is a very big, as you know, private sector organisation in the education space, which, in case you don't know, has almost 1,700 schools in Pakistan. It teaches 275,000 children, 48% of whom are girls, so that is a very good record. And in case you didn't know, all 12,000 teachers and principals are women, so it is the largest employer of women in the private sector in Pakistan, bar none, which is a fantastic credit to them. And I think now we're seeing the public sector asking TCF to take on some of their schools in Punjab and Sindh and elsewhere. And we know the damaging effects that COVID has had on education across the world. But Pakistan, there are more children out of school than any other country in the world apart from Nigeria. So there is a huge role for us all to play in that space. And I think also in the healthcare environment, we all know the impact that COVID has had, and I would congratulate Pakistan on what has been a very successful response to the global pandemic. If we consider the size of the population and the pressure that the public sector health system is under, with the resources that are put towards that, to have come through now 4 waves of COVID with such a low number of deaths, considering the population of 220 million people, is, I think, a credit to the Pakistan system, but also to the many organisations like the Rotary Club that support health improvements in the public sector, and through some reduction in communicable diseases, non-communicable diseases, etc. And then, of course, security. Look, we're in a city like Karachi, which has suffered in the distant past from security problems. I mean, there is still obviously a challenge around violent crime, but in terms of terrorism, there has been an enormous success in tackling that. And we hope that the difficult situation across the border in Afghanistan is not going to severely impact Pakistan with any spillover effect. When we see the challenges that women and girls are having in Afghanistan, I think it just reminds us of the hard work that we still need to do to remind everybody of their right to education, their right to healthcare, and their right to a safe place in society. And so I hope that this programme and some of the objectives around it are successful, and that we will be able to support this Rotary Club and others to do more in this environment. Thank you again for inviting me, and I look forward to hearing from some of the other speakers. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Riaz Shah, a Special Assistant Rosian. Sir, please come on the stage. I'm assuming it's on women empowerment, and since the name is She Conference, someone I've known her for some time, and she seems really dedicated, hardworking, independent, and I've seen her, struggle and coming to this certain position, after working really hard. And she seems to have a lot of potential, and I'm sure she'll go a long way whatever she's doing. She's a part of Rotary Club and a few other organizations, and I hope she can also do a He Conference in future. हमारी इस सोच में है कि ख़वातीन को आगे नहीं बल्कि उनको घरों में कैद रखना चाहिए. That has been proved today by this gathering, that we all want a good life and better life for our women folk. So thank you very much. Again, I would like to call Azad Saab, Ikhtiar Saab, and Shah Saab to come on to the stage and distribute few more awards.
आप लोग थक गई हैं, आप लोग क्यों बैठ गई जनाब? But somehow we did it. And she ने जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, ये हम सब के लिए एक रिकग्निशन है to support everybody who is working hard under one platform. Thank you so much. जब event by these ladies was to bring awareness about the fantastic conference, and I think she piece of information you have shared. I also acknowledge the excellencies for his visit. Azad Sahab Maulana, Special Assistant to the Prime Minister, and my very dear friend, brother, and well-wisher, Kaukab Iqbal Sahab, and all the distinguished guests, ladies and gentlemen. Shamazur Rahman Sahab is here, I acknowledge his presence. Someone is a new entry in Karachi field. She's come up gradually और फिर वो छा गई हैं. We like her because she's very focused. She do smaller things and then gradually she is expanding it. She's even diversifying her topics. I still remember when she used to come and discuss for organizing any event. She was very shy, she was very confused, and that is the Samman Abid has started from there. And today she is reached to a very confident lady and organizing such a major event with full confidence. I congratulate Samman. It is incredible performance. All our support to you. We want more and more ladies and girls like you in the market. Now she is a very important concept, and someone has introduced it. These three areas are of vital importance for any social sector development. You cannot develop a society, किसी माशरे को आप इन तीन में किसी एक चीज में कमी रह जाए, चाहे हेल्थ में, if you are lacking in health, if you are lacking in education, if you are lacking in security, you cannot give a stable, strong society. You cannot give a vibrant nasal generation. So, first of all, I just wanted to start by saying that she is a very important word covering all the important sectors of the society, and talking more and more about them, giving more and more focus to them, means we are educating our new generation, particularly ladies. देखिए, I have more regards for ladies and Ma, and me and my brother have been very close to my mother, because ख्वातीन एक नस्ल देती हैं जो आगे माशरे को लेके जाती है, मुल्क को आगे लेके जाती है, कौमों को आगे लेके जाती है. और उस नस्ल देने में अगर उसकी सेहत अच्छी है, अगर वो तालीम के जेवर से आरास्ता है, अगर वो सिक्योर्ड फील कर रही है, तो वो एक अच्छी नस्ल को परवरिश दे सकती है. लेकिन अगर इफ शी इज लैकिंग विद education, security, and health, then she will not be able to give a very strong, vibrant, dynamic generation. No. So for Pakistan, it is very, very important that the ख्वातीन जो हमारी हैं, वो health में भी माशाल्लाह, good health, good education, equipped with the most sophisticated tools of education to groom their
children's and new generation. And end of the day, it is the security, because if they don't feel secured, they cannot deliver. And why not? Why they should not feel secured? They are equal like us. They are a great contributor. माशरे की फैलाव में और तरबियत देने में हमसे ज़्यादा उनका हक. They have a better contribution than us. तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहता हूँ कि recognizing all those through award, through shields is bare minimum. Respected guests, Excellency, dignitaries, attendees, Assalamu alaikum. I know it's the last part of the program, and here I would just like to repeat, which I always do, the four-way test of Rotary International. ये उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेस्ड करता है और मकसद कहता हूँ कि you can be a member of a Rotary club, but to be a Rotarian you have to live, you have to personify the four-way test in your personality. It should be part of your DNA, it should be part of your character, personal life में और आपकी business और professional life में. और वो क्या है? Whatever you think, say or do, you have to ask yourself 4 interrelated questions. पहला सवाल है कि is it the truth? और सच अकेला काफ़ी नहीं है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि सच लड़ाई भी करा सकता है, तो सच अकेला काफ़ी नहीं है. पहला सवाल है is it the truth? और दूसरा है is it fair to all concerned? और थर्ड है is it going to build friendship and goodwill? और फोर्थ इसके साथ साथ हम सवाल पूछते हैं is it beneficial to all concerned? तो ये फोर-वे टेस्ट है हमारे रोटरी का, जो हमें रोटेरियंस को बाकी नॉन रोटेरियंस से ये नहीं कि वो भी नहीं वो भी फॉलो करते होंगे, लेकिन रोटेरियन जो होता है सही मानो रोटेरियन वो होता है जो फोर-वे टेस्ट को पर्सोनिफाई करता है और लिव करता है अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में. तो आप वो साहिबान जो जिन्होंने रोटरी ज्वाइन नहीं किया है, आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द फैमिली ऑफ रोटरी. और जो भी कार खैर आप करते हैं, ज़ाहिरी बात है आप और आपके घर वाले और वालदैन और दोस्त अब आप कार खैर बहुत करते हैं और इसमें पाकिस्तान सबसे आगे है कार खैर में. लेकिन वो कार खैर आप उसकी रीच और इम्पैक्ट एम्पलीफाई कर सकते हैं अगर आप रोटरी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें. तो आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन रोटरी एंड टू कैटapult व्हाट गुड यू आर ऑलरेडी डूइंग through the Rotary's platform. Thank you very much. की हैसियत से और मेक ए विश फाउंडेशन के बानी सदर की हैसियत से मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया गया है और मैं आज के मुंतज़मीन का, ऑर्गेनाइजर्स का, ख़ास तौर पे समन आबिद का और दूसरे जो हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, स्पॉन्सर्स और जो भी टीम है इनकी, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि एक यूनिक इन्होंने आज ये तकरीब इनाकात किया है. और मेन मकसद जिसका है ये है कि वो लोग या वो ख़वातीन जो डिज़र्व करती हैं अचीवमेंट्स के लिए, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उन्हें एक्नॉलेज किया जाए, उन्हें अचीवमेंट्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाएँ. मैं हमेशा समन को देखता हूँ, माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्टिव, ख़ास तौर पे लेडीज़ के उसमें मैं इनको देख रहा हूँ, फीमेल्स को जिस तरह वो लेके चल रही हैं और रोज़ाना किसी न किसी तकरीब की होती है जिसमें औरतों को जो हैं शील्ड्स वगैरह से नवाजा जाता है. और यहाँ पे आज कोकब इकबाल साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं. माशाल्लाह अभी कुछ दिनों पहले इनका एक बहुत बड़ा फंक्शंस हुआ था जिसमें गवर्नर पंजाब साहब भी तशरीफ़ लाए थे. और बड़ी अच्छी चीज़ है कि कराची की रौनकें अब वापस आ रही हैं. एक वक्त था कि कोविड की वजह से सब लोग डर गए थे और निकलना छोड़ दिया था. अब मैं ये देख रहा हूँ कि इवेंट्स हो रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं और यही कराची की जो है एक पहचान है. मैं समन आबिद को, उनकी टीम को और जो दूसरे यहाँ पे लोग हैं उनके साथ उन सबको
अपना ताउन का यकीन दिलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेक ए विश फाउंडेशन जो है उनको भी आप अपने साथ इसके अंदर इंक्लूड करें। लास्ट टाइम कोकब साहब ने जो तकरीब का इनेकाद किया था उसमें मेक ए विश फाउंडेशन को भी एक अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है मेक ए विश फाउंडेशन के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जो लोगों का, और ख़ास तौर पर समन आपका। थैंक यू सो मच। मैं तो समझा मुझे कोई सांस लेने का मौका मिलेगा और मैं पहले समझूंगा कि इवेंट का फॉर्मेट क्या है, लेकिन मैं जहाँ तक अक्ल काम कर रही है, क्योंकि होप और शी लिखा हुआ है तो यकीनन ये ख़वातीन से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैं आज की तमाम ख़वातीन को और ख़ास तौर पर समन को इस प्रोग्राम को इनेकाद करने पर, ऑर्गेनाइज़ करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर शोबे में जिस तरह से ख़वातीन काम कर रही हैं, उम्मीद करूँगा कि आइंदा उससे ज़्यादा जुस्तजू के साथ ख़वातीन काम करती रहेंगी। हमें जब भी मौका मिला किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हमने हमेशा ख़वातीन की अचीवमेंट्स को और उनकी कोशिशों को हमेशा इनकरेज किया, और हम जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हमें रोल मिलता रहेगा आइंदा भी, इससे पहले भी हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रोल मिला। हमने पूरी कोशिश की कि हम ख़वातीन को जितना प्रमोट कर सकें हम उन्हें ज़रूर करें, और इस मरतबा फिर दिसंबर 30 को इलेक्शंस हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इत्तफाक से फिर मेरे ग्रुप ने मुझे नॉमिनेट किया एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो लिहाजा मेरे इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और ये 2 महीने हमारे बड़े सख्त हैं, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान में तमाम वोटर्स के पास जाना होता है और अपने वोट्स मांगने पड़ते हैं। यहाँ से लेके गिलगित तक, पेशावर जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, बलूचिस्तान जाना पड़ता है। तो मैं आज के इस इवेंट का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम ख़वातीन से और जितने मेरे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आइंदा आने वाले इलेक्शन में यूबीजी को पूरा सपोर्ट करें। यूबीजी के कैंडिडेट डॉक्टर नुमान इदरीस भट्ट, जिनका सियालकोट से ताल्लुक़ है, और सियालकोट के लोगों के लिए आपके इल्म में होगा कि वो सियालकोट के इस किस्म के एनर्जेटिक लोग हैं कि जब वो कोई चीज़ ठानते हैं तो वो अपना एयरपोर्ट खड़ा कर देते हैं, और एयरपोर्ट खड़ा करने के बाद जब उन्होंने ठानी कि अब ना सिर्फ एयरपोर्ट के दूसरी एयरलाइंस यहाँ पर आई, हमें अपनी एयरलाइन भी बनानी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सियालकोट के तमाम लोगों ने मिलकर एयरलाइन भी क्रिएट कर दी, और एयर सियाल में आप बहुत सारे दोस्त आजकल सफ़र करते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये विजनरी लीडरशिप है, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस मरतबा के जो प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन जो नॉमिनेट किया है यूबीजी ने, वो डॉक्टर नुमान इदरीस भट्ट को, उनका जो ताल्लुक़ है वो भी सियालकोट से है। तो मैं समझता ये हूँ कि हमें अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, जो अच्छे लोग हैं बिज़नेस कम्युनिटी में, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उन्हें आगे लेकर आना चाहिए कि ना सिर्फ वो तमाम ख़वातीन को प्रमोट कर सकें, बाकी जितने भी बिज़नेस रिलेटेड एसोसिएशंस हैं या चैम्बर्स हैं उन तमाम को भी प्रमोट कर सकें। मैं हमेशा से ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि ख़वातीन जिस हालात में अपने घर से निकलती हैं हमारे इस मुआशरे में, तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो खातून या कोई किसी की माँ होती है या किसी की बेटी होती है या किसी की बहन होती है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम अपने घर में अपनी माँ की, बहन की, बेटी की इज़्ज़त करते हैं, तो जितनी भी ख़वातीन इस मुआशरे में निकलें किसी भी काम के हवाले से, तो हमें उन्हें उसी अंदाज में अपनी माँ, बहन, बेटी समझना चाहिए और उसी रिस्पेक्ट के साथ हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ताकि वो ख़वातीन आगे बढ़कर इस मुआशरे में अपना रोल अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। Our government, Sindh government, is also working on these health, security and education, and we are trying our best. Our CM Syed Murad Ali Shah and our party chairman Bilal Bhutto Zardari Sahab, and
مجھے فخر ہے کہنے میں کہ جب خواتین کی بات کی جاتی ہے تو میں یہ بھولتا نہیں کہنا کہ ہماری محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ فخر پاکستان تھی، جو میرے خیال میں بر صغیر کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے، تو ان کی ہم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ان پہ جو وومن امپاورمنٹ پہ اور وومن رائٹس پہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ اور سی ایم صاحب، ہماری منسٹر شیلا رضا صاحبہ آنی تھی، ان کا انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے گھر میں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو اس اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں زیادہ بتاتی، مگر آئی ہیو سم تھنگس میں لایا ہوں اپنے ساتھ، تو آئی ول ٹیل یو مور. اور اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ کی بات اگر میں کروں گا سندھ گورنمنٹ کی، تو اس میں ایجوکیشن پہ ہم نے فوکس رکھا ہے. ہم نے جو ٹیچرز تھے یا ہم نے بائیو میٹرک سسٹم لایا، اس کے علاوہ اسکولز پہ بھی زیادہ کام ہو رہا ہے اس پہ. اور ہیلتھ کی بات کی جائے تو ہیلتھ میں ہماری منسٹر عذرا پیچو صاحبہ، شی از ورکنگ ویری نائس. اینڈ ہمیں اپنے جو ابھی کیمپین چلی تھی اس میں بھی سندھ گورنمنٹ نے بڑا رول ادا کیا ہے، جو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہاسپٹلس کی بات کی جائے تو سندھ گورنمنٹ نے سب سے زیادہ محنت کی ہے اس پہ، جس میں ہمارے جو میرے خیال میں پاکستان لیول پہ NICVD ہو گیا یا جمس ہاسپٹل ہو گیا، جس میں آپ کے لاکھوں روپے کا جو علاج ہوتا تھا وہ اب فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کے جگر کی جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ لوگ جاتے تھے بیرون ملکوں میں جو 80 لاکھ روپے خرچے کرتے تھے، دے اسپینڈ ملینس آن دیم، بٹ ناؤ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ فری میں آپ کا آپریشن ہوتا ہے، اور میرے خیال میں 100 سے زیادہ آپریٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ. وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا تو ہماری گورنمنٹ نے کافی بلز اسمبلی میں پاس کروایا، جس میں آپ کے ڈومیسٹک وائلنس، ہیرسمنٹ ایٹ ورک جن کی پہلے بات ہو رہی تھی، اور سیف ہاؤس اور دارالامان اور مائنورٹی رائٹس، اور اس کے حوالے سے اور جو ہے لاتعداد کام جو ہے سندھ گورنمنٹ نے کیا. ہمارا وومن ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا 24 آورس جو ہے 24 آورس جو ہے آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں. ہیلپ لائن نمبر بھی ہے، جن کو بھی کوئی پرابلم ہو لیڈیز کو، جس میں ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں ہیرسمنٹ کے، یا کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی ان کو کسی بھی حوالے سے، تو دے کین کال اینی ٹائم. 24 آورس نمبر ان کا آن ہے. میں وہ نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کرواؤں گا، سمن کو دوں گا تو وہ دیں گی. اس کے علاوہ جو ہے سیکیورٹی کی بات تھی، اور ایجوکیشن کی تھی، اور ہیلتھ کی تھی. میں نے واضح بتا دیا آپ کو. سمن عابد کی میں بات کروں گا کچھ. تو انہوں نے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑی محنت کی. آنری کونسل جنرل یمن جناب محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM، جناب محترم میرے بہت ہی مخلص اور پیارے دوست مولانا آزاد جمیل صاحب، رینونڈ پرسنالٹی ان پاکستان، سلیم خان صاحب، دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سمن عابد کو اور ان کی ٹیم کو کہ جنہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام ترتیب دیا. خواتین کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کراچی اور دیگر شہروں میں منعقد ہوتے رہتے ہیں. یقیناً یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے بغیر اس دنیا میں رونق ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ اگر ہمارے گھر میں بچیاں نہ ہوں، ہمارے گھر میں بہنیں نہ ہوں، تو وہ گھر بڑے سونے لگتے ہیں. اور خواتین کا وہ کردار
यकीनन हमारे जहन में भी उजागर होता है जो इस्लाम के हवाले से हमारी ख़वातीन ने किरदार अदा किया। यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला, बहुत सारे मसाइल इकट्ठा होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मगर एक बात मैं कहता हूँ उन बच्चियों से, उन ख़वातीन से कि सिक्योरिटी का मसला कोई इतना गंभीर मसला नहीं है। पूरी दुनिया में मेरी नज़र में कोई माइका लाल खातून को हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता अगर वो अपना पोछा ना पकड़ाए, अपनी तरफ मुतवज्जा ना करे। तो ये कहना बेजा ना होगा कि हमारी ख़वातीन इतनी बहादुर हैं कि उनकी तरफ कोई आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और मैंने ये देखा है कि अब बहुत सारे दफ़ा अब तो एक कानून साजी यानी हो चुकी है और हरासमेंट के हवाले से अब ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और ऐसे उनको बताया जा रहा है। मैं खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम में यूनिवर्सल सर्विसेज फंड में बहैसियत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। तो जब बोर्ड हमारी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा साहब हमें एक जो है वो ये एक प्रोग्राम तरतीब देना है कि, तो मैंने कहा यार ये जो ऑफिस में देख रहा हूँ ये तो बड़ा ओपन स्पेस है और यहाँ पे तो कोई केबिन नजर नहीं आते, तो ऐसा क्या या आपको जो है लग रहा है कि यहाँ पे हरासमेंट हो सकती है? हाँ, अलबत्ता ये है कि जो चैम्बर हैं, कोई ऐसे जो बंद ऑफिसेज हैं, वहाँ तो कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है, मगर जब ऐसे ऑफिसेज हैं तो वहाँ आपको कोई ऐसा अननेसेसरी डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। बहरहाल ख़वातीन की हिफाजत करना खुद उनका अपना फ़र्ज़ है और बहैसियत भाई माँ बाप हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हिफाजत के लिए आगे आएँ और बहुत सारे जो क़वानीन हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। हेल्थ बहुत बड़ा अहम सब्जेक्ट है और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। 20 नवंबर को पाकिस्तान हेल्थ केयर समिट इसी मैरियट होटल में मुनक्किद की जा रही है सलीम भाई, और ये चौथी या गालिबन बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान हेल्थ केयर समिट के हवाले से, और उसमें जो है खुसूसी तौर पे जो ख़वातीन की हेल्थ है वो हमने एक मौजूद रखा हुआ है कि, और ये हेल्थ केयर समिट करने का मकसद भी यही है कि जो यहाँ पे हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनवाया, पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बनाया, तो उन लोगों को को कंट्रोल करना, यानी जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अगर हमारा कोई पेशेंट जाता है, कोई खातून जाती हैं, तो अननेसेसरी चार्जेस ना हो। फिर दूसरी बात यह कि जो अताई डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ आपने देखा कि कितने ऑपरेशन हमने कराया, कितने क्लिनिक बंद करा दी और लातादाद वो काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेक्टर भी जो है हम उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और एजुकेशन, कहते हैं ना कि अगर बच्ची तालीम याफ्ता ना हो तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, तो तालीम बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मौजू बहुत लंबा है, मगर एक अनाउंसमेंट, मैं समन आबिद जो हैं बड़ी एनर्जेटिक और मेरे साथ बहुत काम किया इन्होंने, और इनमें इतनी सलाहियत है, इतनी बहुत ही जल्दी इन्होंने ये जो तमाम कराची में तकरीबन जितनी भी तकरीबात हो रही हैं उसमें भी गेस्ट ऑफ ऑनर होती हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करती हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ भी इनका एक बहुत बड़ा लाइजन है और इनकी पार्टिसिपेशन हमारे साथ है। आज में हमारे पैटर्न इन चीफ हमारे दरमियान में मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। उनकी इजाज़त से मैं एक ख़वातीन विंग कायम करना चाहता हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन में, क्योंकि असल जो कंज्यूमर्स हैं हमारे मौलाना आज़ाद जमी साहब वो हैं ख़वातीन का एक बड़ा वो है जो हमारी कंज्यूमर्स हैं। और ख़वातीन के लिए जो समन आबिद, अगर आप थोड़े से एक बात सुन लें, आपके लिए कह रहा हूँ
کہ خواتین ونگ قائم کر رہا ہوں کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان میں, اور اس کی پہلی یعنی ظاہر ہے پہلے ہی وہ ہو رہا ہے, تو سمن عابد کو اس کا چیئر پرسن بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ سمن عابد کو جو ہے اس میں خواتین ونگ کا جو ہے چیئر پرسن بنا رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کنزیومر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم جو کہ پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, تو اس میں جو ہے وہ خواتین ہمارے ساتھ آئیں اور سمن اس کو لیڈ کریں, اور اچھے طریقے سے اپنے ساتھ ان کی پوری ٹیم ساتھ میں ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وسائل ہمارے درمیان ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم مل بیٹھ کے اپنے مرزا اختیار بیگ صاحب کے ماشاءاللہ اتنی وہ ہے, ہمارے یہاں پہ CM2 کے اسپیشل اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اور مولانا صاحب کا ایک بہت بڑا سرکل ہے, یعنی گرویدہ ہیں لوگ ان کے, چاہے خواتین ہوں اور چاہے ہمارے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ہمارے میڈیا کے لوگ ہوں. تو میں اس بات پہ بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وچ از اے لیب, وہاں پہ کام کر رہی ہوں. بیسکلی ایڈوانس لیب جو ہے اٹس اے بگ پلیٹ فارم, ہماری ناٹ جسٹ کراچی بٹ اوور آل پاکستان ہماری ساری برانچز ہیں وہاں پہ. سو ہم وہاں پہ صرف پیتھولوجی نہیں کرتے, ناٹ اونلی دی لیبس, ہم وہاں پہ کنسلٹنگ کلینکس بھی کرتے ہیں, ہم وہاں پہ ویکسینیشن بھی کرتے ہیں. وی ڈو آل دا استھیٹک ٹریٹمنٹس, اینڈ پلس فار آل آف دی لیڈیز ہیئر ہمارے سارے استھیٹک ٹریٹمنٹس ابھی 50% آف پر ہیں. Also, regarding me being a doctor, actually it's a very difficult phase because you all know کہ اتنا آسان نہیں ہوتا MBBS کرنا, پلس اس کے جو سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اٹس ناٹ دیٹ ایزی. میرے اپنے پیرنٹس نے بہت مشکل سے مجھے MBBS کرایا بیکاز آئی اسٹل ریممبر جب میں MBBS میں انٹر ہو رہی تھی. سو دا فرسٹ ایئر وین آئی گیو مائی ٹیسٹ, تو میں نے ٹیسٹ گورنمنٹ کا نہیں کلیئر کیا. سو فار دیٹ ریزن مائی پیرنٹس سیڈ کہ ابھی تو میں MBBS نہیں کرنا, تو میں ویٹ کرنا ہے, آئیدر ڈو سم تھنگ ایلس, بیکاز میں کوکنگ بہت اچھی کرتی تھی, بیکنگ بہت اچھی کرتی تھی. دے سیڈ کہ تم شیف بن جاؤ, بٹ آئی سیڈ کہ نہیں, میں MBBS ہی کروں گی. اینڈ دین آفٹر 2 years میں نے بیچ میں 2 سال کا گیپ لیا, میں نے AKU میں وہاں پہ کام کیا, میں نے ساتھ میں ایڈوانس لیب میں کام کیا. ان دیٹ ٹائم پیریڈ میرے اندر اتنا کانفیڈنس آ گیا تھا, اینڈ دین آئی گیو مائی ٹیسٹ اگین. اس کے بعد میرا MBBS میں ایڈمیشن ہوا, اینڈ مجھے اسکالرشپ پہ ملا تھا ایکچولی, سو آئی ہیڈ نو ایشوز ود دا فیس اینڈ ایوری تھنگ. سو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ فیز فار می, بٹ اب میں اس لیول پر ہوں کہ میں نے ابھی سونالوجی بھی کر لیا ہے, میں نے استھیٹک بھی کر لیا ہے, میں UK سرٹیفائڈ استھیٹک فزیشین. Also, I'm doing gynecology now. Thank you so much. میں نے کچھ لکھا نہیں, لیکن یہ کہ اتنا میں نے ضرور لکھا ہے کہ سب کو سلام کرنا ہے میں نے آج, اور یہ کہ بہت آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس کانفرنس, اینڈ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری از پراؤڈ ٹو بی اے اسپانسر فار دس ایونٹ ایز ویل. بہت اچھے میرے پیارے پیارے بھائی نظر آ رہے ہیں, کوکب بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, اشتیاق بھائی جا رہے ہیں. تو اور آئی تھنک سمن ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. سمن, تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی تھنک ابو آل یہ کہ آپ ویمن وی آر سپورٹنگ ویمن ان ایوری تھنگ دیٹ دے ڈو, گھر سے لے کے باہر تک. اور یہ کہ ایجوکیشن, جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے, چاہے وہ انٹرپرینورشپ کی بات ہو, چاہے جو بھی بات ہو, آئی تھنک اٹس اے گریٹ پلیٹ فارم فار سپورٹنگ آل ویمن. اور میرا کام جو ہے وہ عیسیٰ لیبارٹری کے علاوہ ڈائریکٹر ہونے کے علاوہ ایجوکیشن کا بھی ہے. تو ہیلتھ میں جتنی بھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے عیسیٰ لیبارٹری, تو وہ ساری میرے انڈر ہے. ریڈیولوجی, آئی ایم اے ریڈیولوجسٹ بائی پروفیشن. تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے کے جائیں گے, اور نیکسٹ ایئر آئی تھنک ویل ڈو اے بگر مور پرومسنگ ایونٹ. تھینک یو سمن فار کالنگ می ہیئر. تھینک یو.